आज हम लोग वर्चुअल वर्क देखेंगे। सेंट्रल ऑर्बिट खत्म हो गया। थोड़ा वर्चुअल वर्क के बारे में देख लेते हैं, क्या है ये, प्रॉब्लम कैसे होते हैं, किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उनके टेक्निक्स क्या है। देखो इंट्रोडक्शन। इन दिस सेक्शन वी शैल डील विद वर्चुअल वर्क done by forces acting on a particle or on a body। यानी एक पार्टिकल या बॉडी पे वर्क को हम लोग स्टडी करेंगे। Before starting with the virtual work, we require the definition of displacement and real work means actual work। क्या हुआ उसको देखा जाए। तो displacement क्या होता है, देखिए, this is point A, this is point B, A से B की ओर straight line है। Change of position of a particle from point A to another point B by any path whatever is called a displacement of the particle। Displacement is a vector quantity. Vectorially, it is denoted by vector AB. The magnitude is the length AB and the direction is from A to B. Next, a translation displacement. If a particle be displaced from P to a new point P dash, देखो यहाँ O से है, P से P dash में चला गया, in the direction OP, where O be the origin, then such a displacement without rotation है ये, is called translation displacement. Here translation displacement क्या हुआ, PP dash, and this is OP dash minus OP. इसके बाद है रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट। ये क्या हुआ, इसको देखिए। लेट ओ बी ए फिक्स्ड पॉइंट, ओ एक फिक्स्ड पॉइंट है और पॉइंट पी से पॉइंट पी डैश पे चला गया। तो ये इसका क्या हुआ, घुमा है सम एंगल थीटा से या कोई और एंगल बोल दें। इफ द पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड ओनली बाय रोटेटिंग द बॉडी अबाउट ओ, के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, then such a displacement without translation is called rotation about O। इसमें translation नहीं है, केवल rotation है। If under rotation P and P dash are the two positions of a particle, then OP is equal to OP dash। इसके बाद है general displacement। Combination of rotational and translation displacement called general displacement। Here the general displacement is, क्या है general displacement, PP dash। PP dash को PP dash जनरल डिस्प्लेसमेंट है, ट्रांसलेशन भी हो गया और इसका रोटेशन भी हो गया, रोटेट किया और इतना हिस्सा आगे बढ़ गया। तो OP इज इक्वल टू क्यू, बट ये ट्रांसलेशन हो गया QP dash। तो PP dash इज गिवन एज P क्रॉस 1/2 R plus R dash plus vector U, where U is translation, where E is a small rotation, U is a small translation, R is position vector of the point P। If the general displacement is very small and let it be denoted by dr, then dr is E cross R plus U। इसको हम लोग याद रख लेंगे और किसी समय इसका हम प्रूफ तुम लोग को दिखा देंगे, लेकिन अभी इसको हम लोग याद रख लेना है कि dr इज इक्वल टू E क्रॉस R प्लस U। अब वर्क क्या होता है देखें। A force is said to do work on a body when its point of application moves in the direction of the force। देखो पॉइंट A से पॉइंट B में फोर्स F है। The work done by a force is measured by the product of the magnitude of the force means F and the distance through which its points of application is moved in the direction of the force। Force के direction में कितना distance गया। If a constant force F acts at A and displaces it through a distance D, where AB is equal to small d, then the work done by force F is given by F dot D। F dot D से हम लोग work done को देंगे। In general, if the displacement is not in the direction of the force, अगर force के direction में नहीं है तो उसके component ले लेंगे। Let the particle A be acted upon by a force F and displace the particle to B, where AB is equal to D। Let BC be perpendicular to AC, then the work done by the force is F dot AC। So it will be F into D cos theta। उसका component देखेंगे, कुछ example से clear हो जाएगा। Convention of sign: if the point of application of the force is displaced in the direction of the force, the work done is positive, and if it in the opposite direction, the work done is negative। If we lift a weight W to a height h, the work done is negative and is equal to minus WH। अब ये थ्योरम देख लें।
ये पूछा जाता है। The algebraic sum of the work done by a system of forces acting on a particle is equal to the work done by the result. तो ये थ्योरम अच्छे से तैयार कर लेना है। Let F1, F2, F3, F4 so on be a system of forces acting on a particle at O. यहाँ पार्टिकल इस पे F1, F2, F3, F4 ये फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। Let the particle displaces through a distance d. तो पार्टिकल डिस्टेंस d से डिस्प्लेस हो रहा है, where OA is equal to d. Making angles θ1, θ2, θ3, θ4. ये इस एंगल बना रहा है F1, F2, F3, F4 का θ1, θ2, θ3, θ4 and so on. Respectively with the direction of OA. Let F be the resultant of the system of forces F1, F2, F3 and so on, and theta be the angle between F and OA. The algebraic sum of the resolved parts of the forces along OA is equal to the resolved part of the resultant along OA. यानी कि जो फोर्सेस हैं उनका रिजॉल्व पार्ट लेना है along OA, वो वही होगा जो रिजॉल्व पार्ट है रिजल्टेंट का along OA. Means F cos theta will be F1 cos theta 1 plus F2 cos theta 2 plus F3 cos theta 3 and so on. So F cos theta is written as summation F1 cos theta 1. Hence total work done by the system will be F1 into d cos theta 1 plus F2 into d cos theta 2 plus so on. Or you can say F1 cos theta 1 into d plus F2 cos theta 2 into d and so on. So it is written as d into F1 cos theta 1 plus F2 cos theta 2 plus F3 cos theta 3 plus so on. So it is equal to d into summation F1 cos theta 1, or it is equal to d into F cos theta. So it is nothing but the work done by the resultant force. Means hence the theorem. तो ये हमारा theorem प्रूव हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं वर्चुअल वर्क का डेफिनेशन पे। We know that if a number of forces act on a particle or a rigid body, and the particle undergoes some displacement, then some actual work is done by these forces. यानी कि किसी पार्टिकल पे अगर हम कोई फोर्स लगाएं और उसका कुछ डिस्प्लेसमेंट हो जाए तो हम कहेंगे कि एक्चुअल वर्क डन। But if the particle be in equilibrium under a system of forces and is imagined to undergo a slight displacement consistent with the geometrical conditions of the system, then the work done by the system of forces under this virtual displacement is called virtual work. अब वर्चुअल वर्क में क्या है कि एक्चुअल में उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, लेकिन हम इमेजिन करते हैं कि वो उसका कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ और उसमें क्या कंडीशन है, कंसिस्टेंट विद द ज्योमेट्रिकल कंडीशंस ऑफ द सिस्टम, इसमें चेंज नहीं होगा। द थ्योरम्स ऑन वर्क व्हिच इज ट्रू व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज एक्चुअल is also true when the displacement is virtual, because the work is after all a work whether it is actual or virtual. एक थ्योरम और हम लोग देख लेते हैं आज के लिए। Principle of virtual work done by a system of forces acting on a particle. देखो स्टेटमेंट क्या कहते हैं। The necessary and sufficient condition for a system of coplanar forces acting on a particle be in equilibrium is that the algebraic sum of virtual work done by the system of forces in any small displacement consistent with the geometrical conditions of the system is 0. अच्छा, तो देखिए let F1, F2, F3, F4 be a system of coplanar forces acting on a particle at O. पार्टिकल ऊपर है, उस पर F1, F2, F3, F4 and so on ये forces act कर रहे हैं। Let F be the resultant of the system of coplanar forces, और ये F है उसका resultant, and O dash is equal to D be an arbitrary small displacement of particle from O to O dash. पार्टिकल पहले O पर था और अब ये O dash पर चला गया। तो कह रहे हैं कि ये जो सिस्टम ऑफ कोप्लानर फोर्सेस है वो इक्विलिब्रियम में है अगर जो वर्क है वो हमारा 0 हो जाए तो इक्विलिब्रियम में हो। तो इसका हम लोग देखते हैं प्रूफ क्या है। Since F is the result, then vector F will be your F1 plus F2 plus F3 plus F4 and so on. तो वेक्टर F is your summation of I, where I is equal to 1 to जहाँ कितना फोर्सेस ले रहे हैं। The algebraic sum of virtual work done by the system of coplanar forces will be F1 dot D plus F2 dot D plus F2 dot D plus 1.
means you can write it as f1 plus f2 plus f3 plus 1 dot d. So it is your f dot d because this summation is your f. Necessary condition क्या है? The system of forces be in equilibrium. अगर system of forces equilibrium हो तो resultant force F हो जाएगा 0 और F 0 का मतलब F dot D 0 so virtual work done. Now the virtual work done by the system of forces is F dot D, so it is 0 dot D, it is 0. तो हमारा necessary part fulfill हो. अब sufficient part हम लोग देख लें. Let the algebraic sum of virtual work done by the system of forces acting on O be 0 and we have to show that the forces are in equilibrium. यानी कि F dot D is equal to 0 sufficient condition में तो यहाँ से निकल जाएगा हमें F equal to 0 because D is not 0. So F is 0 and the forces are in equilibrium. तो ये हमारा थ्योरम प्रूव हो गया. इसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरम है we will see नेक्स्ट क्लास. तब तक के लिए तो मैं इसको नोट कर लूँ. कोई क्वेरी है तो पूछो मुझे.